एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 से और भी पार्ट्स बन चुके हैं। इसको देखना है वो व्हाट्सएप कर सकता है, उसके बाद उसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो परचेज कर सकता है। इसमें जो पहला लेसन है रिलेशंस फंक्शंस का क्लास 12 का, ये सीरीज चल रही है हमारे यहाँ। डेली शाम को स्टार्ट करती हूँ मैं। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए आपको तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। Okay, I'm going to share the question. ये हमारा क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं ये एक्सरसाइज 1.3 हम लोग कर रहे हैं। तो इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं। अभी मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करने वाली हूँ आज क्वेश्चन नंबर 9। यानी अभी तक एक्सरसाइज में आपने सीखा कि फंक्शंस निकालना है, तो दिस इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस। तो 8 तक मैं आपके साथ कर चुकी हूँ डिस्कस। आज क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करूँगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है, जो रिलेशन है वो -5 से लेकर इन्फिनिटी तक है, और ये फंक्शन दिया हुआ है हमें, और हमें उसका इन्वर्स निकालना है। और ये दिया गया है कि इन्वर्स की वैल्यू √y + 6 - 1/3 करके आएगी। ठीक है, तो इसको चलिए शुरू करते हैं फंक्शन के साथ। तो यहाँ पर हमें इन्वर्स निकालना है डायरेक्टली, 1 1 वगैरह हमें कुछ ऐसा शो नहीं करना है। ठीक है, तो हमें इन्वर्स इसका सॉल्व करना है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इन्वर्सेबल फंक्शन ये है, इस चीज़ को शो करना है। चलिए सॉल्यूशन इसका किस तरीके से करेंगे ये देखिए मेरे साथ। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपका जो रिलेशन सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है -5 which is not included and up to infinity which is included, and the function is given to us f(x) is equal to 9x square plus 6x minus 5। तो हम कोई y एलिमेंट चूज करते हैं। let y be an element which is the element of the interval -5 to the infinity। कोई एक ऐसा एलिमेंट y है जो इस इंटरवल को बिलोंग करता है। तो हमने इसको शुरू किया, y इज इक्वल टू, ये फंक्शन के बराबर कर दो बेटा, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इसको स्क्वायरिंग से अगर हम सॉल्व करें तो ये हो सकता है 3x + 1 का होल स्क्वायर -1 - 5। हमने कैसे किया देखिए, ये आपका दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये 3x का होल स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर आपको 6x चाहिए। अगर आप a + b लगाते हो तो आप यहाँ पर देखिए कि a की वैल्यू तो आपकी 3 आ गई। यहाँ पर आपका 2ab का वैल्यू जो है वो 6 दिया हुआ है, तो b का वैल्यू आपका ये जो 5 आ रहा है ये 5 नहीं हो सकता। ऐसे अगर आपने ये a रख दिया तो इस तरीके से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये 1 आएगा आपके पास। तो अगर हम इसको देखिए एक्सपैंड कर देते हैं कि ये +1 को एक्सपैंड करोगे बेटा, ये 9x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 है 6x ये बनेगा आपका। तो ये दोनों तो बन गया, लेकिन ये +1 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस +1 को हटाने के लिए हमने यहाँ -1 ऐड कर दिया। क्योंकि देखो बेटा अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, तो इस +1 को हम जोड़ रहे हैं तो इसमें से -1 हटाओ, तभी वो कट करके इक्वल होगा। यानी इसको लाइन को छोड़ दो, फिर हमने इसको +1 भी किया -1 भी किया, जिससे ये मेरा स्क्वायर बन जाए। फिर हमने क्या किया, ये तो स्क्वायर बन गया, तो इसका बना 3x + 1 का होल स्क्वायर बन गया, और ये दोनों आपका ऐड हो गए, 3 - 6 बन गया।
बन रहा था तो हमने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया। अब हमने इस x को इधर ले आया तो y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से बेटा 3x प्लस 1 अगर ये स्क्वायर हटा दे तो ये हो जाएगा अंडर रूट वाई प्लस 6। अगर हमें x का वैल्यू निकालना हो तो 3x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम इसको चेक करेंगे कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है कि नहीं। सो दिस इज द इनवर्स। ओके, सो नाउ अब हम इसको चेक करते हैं कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है या नहीं। आई विल यूज दिस एज केस फॉर चेकिंग दैट। इन्वर्टिबल फंक्शन चेक करने के लिए हमको गॉफ और फॉक चेक करना है। तो गॉफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स के लिए आप पूरा फंक्शन लिखोगे, वो फंक्शन आपका क्या है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, मतलब ये जी लिखा और ये आपका पूरा फंक्शन हो गया। अब ये जो पूरा फंक्शन है, ये जो x निकलता है ये जी एक्स निकलता है, हमको इसके अंदर इसको रखना है। यानी यहाँ पर ये देखिए जो y है इसकी जगह हम ये रखेंगे, हमारा ये फंक्शन क्या है y प्लस 6, यानी 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस 6 और ये माइनस 1 अपॉन 3। अब हम इसको चेक करेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। तो इट बिकम्स, इसको भी जैसे ये फंक्शन इसको वापस इसी में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने चेंज किया था, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6, और ये ऑलरेडी प्लस 6 है अंडर रूट के अंदर, तो माइनस 1 अपॉन 3। तब ये माइनस 6 प्लस 6 कर गया। ये मैंने कहाँ से लाया, ये जो फंक्शन था वो देखो, ये मैंने कन्वर्ट किसमें किया था, इसमें कन्वर्ट किया था, तो इस फंक्शन की जगह हम ये लिख सकते हैं। अब ये माइनस 6 प्लस 6 बेटा कट गया। अभी मेरे पास क्या बचा 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देखना कहाँ पे मैम ने क्या बात बताया। ठीक है, ये हो गया। अभी अंडर रूट से बाहर निकालोगे बेटा तो 3x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3, दोनों 1 बेटा कैंसिल हो गया, ये हो गया 3x बाई 3, ये आपका कैंसिल हो गया, ये देखिए x आ गया। यानी व्हेन यू सॉल्व फॉर द वैल्यू फॉर द कॉम you will get the value x. Clear? Now I am going to solve for the fork. Now for the fork, what we do, f of operation of g of x ये सॉल्व करना है, यानी इस फंक्शन को आपको g वाले फंक्शन में रखना है, g का जो वैल्यू है। तो y प्लस 6 माइनस 1 बाई 3 ये आपका g का वैल्यू आएगा, इसको हमने फंक्शन ऑफ इसमें रखना। तो फंक्शन ऑफ एफ ऑफ 9x स्क्वायर लो ही नहीं, आप ये वाला लेके चलते हैं, ये वाला लेके चलते हैं जिसको हमने इसको कन्वर्ट किया था। ये फंक्शन ऑफ का क्या है 3x प्लस 1, मतलब फंक्शन ऑफ का क्या है 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6। तो ये जो x है यहाँ पर आप ये पूरा रखोगे, तो 3 आप इसको बड़ा ब्रैकेट बना लो और ये अंडर रूट में जाएगा आपका, सो 3 इंटू 3x प्लस 1 होल स्क्वायर, सॉरी आप यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे बेटा, ये वैल्यू आप जब रखोगे तो ये बनेगा 3 अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 और ये आपका 3x का, मतलब ये जो वैल्यू है ये केवल 3 से मल्टीप्लाई होगी और ये पूरी वैल्यू जो है ये होल स्क्वायर होगी, क्योंकि ये 3x प्लस 1 होल स्क्वायर और फिर ये माइनस 6, मतलब ये जो x था उसकी जगह हमने ये लिखना है। अब ये 3 और 3 आपका कैंसिल हो गया, अब ये आपका क्या बचा y प्लस 6 and this is
-1 एंड देन देखो इसको फिर से करते हैं बेटा, कंफ्यूजन हो रही है इसमें, साफ साफ लिखते हैं। देखो बेटा gx का जो वैल्यू आया है वो हमारा आया है √y + 6 - 1/3, ये gx का वैल्यू है, ठीक है। और fx का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, 9x² + 6x - 5, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है 3x + 1 का होल स्क्वायर -6 में, तो ये हम fx का वैल्यू मान सकते हैं। अब हमें निकालना है फॉक, दैट मीन्स f ऑफ ऑपरेशन ऑफ √y + 6 - 1/3। तो ये पूरा वैल्यू हमको जहाँ पर भी x है यहाँ पे रखना है। अभी हम पहले सॉल्व करेंगे 3x, ये भी पूरा वैल्यू √y + 6 - 1/3 और फिर +1 एंड होल स्क्वायर देन -6। आपको 3 और 3 बेटा कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या बनेगा, y + 6 - 1 + 1 देन होल स्क्वायर देन -6। यहाँ पर ये भी आपका 1 कट गया। अब आपको क्या बचा बेटा, y + 6 होल स्क्वायर -6। जब ये होल स्क्वायर किसी भी चीज़ के अंडर रूट का होता है तो सिंपली y + 6 आ जाता है और ये -6, ये दोनों भी कैंसिल होता है। So this becomes the value y, which is your answer. तो आपने यहाँ देखा, जब आपने डॉट ऑपरेशन सॉल्व किया तो we get the value x. When we solve for the fog, then we get the value y. So when we get these types of answer, that function is invertible function. So the function is invertible. So the function is invertible function. So now we can see that अगर हम इन्वर्स पता करते हैं f इन्वर्स y, then it is equal to g of y, which is equal to √y + 6 - 1/3, which is your answer. इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है ये फंक्शन है x to the pi y, वो भी इन्वर्टिबल फंक्शन है। शो दैट f हैज यूनिक इनवर्स and can suppose g1 and g2 are the two inverse of the f, then we have to show that both inverses are same. So how will we solve them? This is a theoretical type question, so just learn how to write theoretically solution. Now function f means x to the y is an invertible function. It is given in the question. ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी। So let f has two inverse. Let g1 and g2. Then f o g1. If we find, then you can write over here y. Then it is I y, function y, and let this must be equal to function of g2 for the y. So from here function of g1, which is y, which is equal to function of g2, which is y. So now from here function and function get cancelled. We have g1y is equal to g2 y. Just like 1 1 we solve this and write this. So now y get cancelled and we get g1 is equal to g2. So we only say that f has unique inverse. It doesn't have two inverse.
It has unique inverse. It has only one inverse. No two different inverses are possible. Okay. Let's see the question number 11. What is given? Okay. Now this is question number 11. There is a function 1, 2, 3. It belongs to ABC. It has a relation with ABC. F of 1 is A, F of 2 is B, F of 3 is C. Find F inverse. We have to find the inverse of F and then we have to show. Okay. Now, this is a mathematical type question. Let's start solution. Now, function F is defined as 1, 2, and 3. A, B, and C. So, in the question it is given to us f of 1 is equal to A, f of 2 it is equal to B, and f of 3 which is equal to C. Now, we find one by one. Now, in order to find the inverse, we can define it like this. There's a function g, a, b, c, which goes to function 1, 2, 3. This is the inverse function. So, from here, g of a must be 1, g of b must be 2, and g of c must be 3. So, now from here, if we find f operation g for a, it means f of g of a. Now f of g of a, that means g of a, its value is 1. So which is f of 1. Now what is the value of f of 1? Which is equal to a. Now f o g for b. So f operation g b. So f, what is the value of gb? It is 2. So we write over here 2. A function of 2 is b. So we write b. Clear? Now f o g c for the c. F function g and function c, which is equal to function of c is 3, which is equal to c. Now for GOF, let's see. So for the GOF, we go for the 1, 2, 3, because in the F we have 1, 2, 3. So G operation, F operation 1. So G operation, F of 1 is A. Now G operation A, we have again 1. Now similarly, GOF for 2. We have G operation F operation 2, which is G. For F2 we have B, so we write B, and for GB we have 2. Now of operation 3, G of function of 3, which is equal to G of function of 3, that is C. Value of GC is 3. Okay, now here we can see that GOF and FOG, these belongs to the identity matrices. That means we see that value of FOG is equal to IY and value of GOF, that is IX. So it is invertible function. So inverse of F is equal to G. So from here,
Now we have to prove F inverse F inverse. So now F inverse is equals to ABC dash 1, 2, 3. Now see over here. In the starting, F is 1, 2, 3 to ABC, but F inverse from ABC to 1, 2, 3. Now if we find F inverse of A, it is 1. F inverse of B, it is 2. F inverse of C, that is 3. So let us find inverse of F inverse. And for that, let it be H. So H is defined as 1, 2, 3 to the set A, B, C. Clear? I'm doing this because we have to prove F inverse of inverse is F. So now that's why I'm doing this. ये करना पड़ेगा बेटा आपको. So from here, H of 1, that is A, H of 2, that is B, H of 3, that is C. Now we have to find firstly GOH for 1, because this is F inverse is G. Okay, so which is equal to G operation H for operation 1. Now G H operation 1 we have A. Now G of A is again 1. Now G operation H then 2. Then G operation H and 2. Now which is equal to G H operation 2, that is B. And G of B is 2. Similarly G operation H3, which is G operation H and 3, which is equal to G H operation 3 is C. So G operation C is 3. Okay. Now we have to find, firstly we find GOH, then HOG. HOG for A. It means H operation G operation A. So G operation A is 1. H operation A is A. HOG operation B. So HG operation B. So HG operation B, that is 2. That is B. And H operation G, that is C. Then H operation G operation C. So HG operation C, that is 3, which is equal to C. Now again we get the same values. So we noted that we get the values A, B, C. So we see that G operation H is equal to IX, then H operation G, IY, where X is equal to 1, 2, 3 and Y is equal to A, B and C. So from here we can write inverse of G is H, which is equal to F inverse of inverse is equal to H, which is equal to F. Hence proved. So ultimately we can write F inverse F, which is equal to F. So a little bit tough and complex problem, but it's easy if we practice it. Now let's see another question.
12. There's a theoretical question. No sets are given to us. Then let's see how will we write this one. So its solution, it is a theoretical question. We write f such that x to the y is an invertible function. Okay. So if it is an invertible function, then there must be a g which occurs like y tends to x. Okay. And moreover, GOF must be equal to yx and FOG must be equal to IY. So f of inverse must equal to g. So now GOF is Ix. So we can write that f inverse of g is equal to Ix. And so, or we can say that f inverse of f is equal to Ix. Similarly, f inverse of f is equal to Iy. So we can say that f inverse y tends to x is invertible function. That is f inverse of inverse which is equal to f. Now this exercise is completed. In the next